Moving on now, let's shift our focus. Let's talk about the phase 1 of polling in Bihar. Overall, the voter turnout is 13.13 so far as of 9 a.m. We'll also try and go across to my colleague Pratibha to get you more details on what's happening on ground. Bihar polling sees 13.13% polling as of now. This is the first phase of polling. Let's see if Pratibha is with us on the broadcast. Pratibha, you've been traveling and covering the length and breadth of Bihar. What is it that you sense on ground? It's very important here also to point out how during this entire election yatra, we spoke to the constituents, spoke to them about their expectations from the government. देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में ये सब चीज होना कोई ये बड़ा बात नहीं, सब चलता रहता है। कौन क्या है, कौन टिकट बंटवारा में क्या हुआ, लड़ाई आपस में हुआ, महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है। महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा, तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। तेजस्वी जी नाराज हो गए थे? अरे तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की भी, तो क्या आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी, लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री? All right, appeals being made to the voters to step out of their homes and to vote to ensure that they choose the candidate who they believe can fulfill their expectations. Many are saying ये बदलाव का वक्त है बिहार में. We have Arunil on the broadcast now. Arunil, phase 1 of polling currently underway. 13.13% is the total voter turnout as of 9 a.m. Well, Swati, good morning to you. At present, I'm reporting from the Mahua constituency. Tej Pratap Yadav, the elder son of Lalu Prasad Yadav, was speaking now. The future, political future of Tej Pratap Yadav clearly depends on this Mahua constituency. Whether he will get the blessings of his father, Lalu Prasad Yadav, as well as his mother, Rabri Devi, who is also a former chief minister, that will again be significant. Now, speaking about Mahua, Mukesh Roshan from the RJD is the sitting MLA. Tej Pratap Yadav is in the fray with his own party, and there is LJP as well. Whether there will be a division in Muslim votes and LJP will benefit, that will be a significant thing to watch out for. Muslim vote share in Bihar is extremely significant to discuss because more than 18% Muslim vote share. Tejasvi Yadav has been attacked by Asauddin Owaisi till now, asking him that you made Mukesh Saini from the VIP party, who's from the Malla caste, as the deputy CM pace. What about representation for the Muslim community? We'll speak to some of the Muslim women who have gathered here. We'll try and gauge their reaction as well. मैम, आपसे बात करेंगे कि किन-किन मुद्दों पे आप वोट करना चाहेंगे? मैं नहीं बोल सकती. Okay, so most of the voters over here, this is a rural belt. They don't want to show their cards. Basically, आपसे बात करेंगे किन-किन मुद्दों पे आप वोट करना चाहेंगे? जो मुस्लिम समाज है, उनको क्या लगता है बिहार के बारे में? सर, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग वोटिंग कर रहे हैं, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा एजुकेशन सही होना चाहिए. जो भी लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो नीचे कम्युनिटी है, बआसानी वो एजुकेशन को हासिल करें. और जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ का जो एजुकेशन है वो जिस तरीके से और राज्यों में जिस एजुकेशन में काम किया जा रहा है. अभी बात करेंगे कि आप भी एक युवा वोटर है, आपको क्या लगता है एक युवा, बिहार के युवा को, खास करके जो ग्रामीण भाग है वहाँ पर क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट और हो सकता है? क्या आप खुश हो ये 20 साल का जो डेवलपमेंट हुआ है जैसा जो सरकार बोल रही है? देखिए, जो हुआ है सो तो हुआ है, और हमें जो चाहिए उस पर हम लोग वोट करें. जो हो गया है सो हो रहा है, जो हमको चाहिए उसके लिए वोट करें. So, Swati will also try and get some more reactions from these people. By the time you do that, Arunil, we have some breaking inputs coming in. The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, is appealing people to exercise their franchise, to step out of their homes and to vote. Nitish Kumar says this is not just a right, but it's their duty. So, Nitish Kumar, the CM of Bihar,
appealing the matadatas, the voters, to step out of their homes and to vote. He says, Pehle matdan phir jalpan. Vote and inspire others to vote as well. Vote first, then refreshments. So that's the tweet by the Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar. Will people give him one more chance to be the CM? Remains to be seen. Let's go across to Pratibha, my colleague, who's joining us with more details. Pratibha, of course, all the leaders today are appealing the matadatas to step out of their homes and exercise their franchise, their right to vote. Absolutely, Swati. Pehle matdan, fir jalpan. That's the message that came in from the Prime Minister as well. And in Patna, which saw less than 50% voting turnout previously, we saw early in the morning as well some people lining up here in the Danapur constituency. I have some voters with me. Let's find out from them. आपने अपने वोटिंग कर दी, कैसा था प्रोसेस यहाँ पर? बहुत स्मूथ था, बहुत ज्यादा स्मूथ था, तुरंत हो गया। अच्छा, तो आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आज? इस बार बदलाव चाहिए हमें। बदलाव वी वांट चेंज। ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पे जो कुछ भी विकास हुआ है उससे खुश नहीं है या बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा? क्या चेंज चाहते हैं आप? इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए बिहार में, बिल्कुल। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ऐसा चेंज चाहेंगे? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है, एज अ वुमेन वोटर आपको क्या लगता है, क्या चेंज देखना चाहेंगी आप यहाँ पर? चेंज देखना चाहूंगी वुमेन की सेफ्टी में। तो अभी जैसे लोग बात करते हैं कि पहले के जंगल राज के बारे में और अभी जैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, क्या आपको ऐसा लगता है सेफ्टी के बारे में जब आप अपनी बात करती है, कैसा चेंज देखना चाहेंगी? जैसा अभी है उससे और अच्छा चेंज देखना चाहूंगी। अच्छा, सेफ्टी, तो सेफ्टी रहेगा मेन मुद्दा आपके लिए। ओके, सो women, most of the women voters that we've been speaking to, Swati, have been speaking about safety, the law and order as well. Some of them talking about change, many talking about development. In rural areas, mainly it's on caste lines in Patna. Many have been speaking about the development that they have seen as well. Some of the youth voters, of course, have also been speaking about the change that they would like to see. But the appeal, of course, continuing to go out to the voters to come out in huge numbers and cast their ballot. Absolutely. A lot of promises have been made to the people. Whether or not people are willing to trust those promises, that will be decided today through their vote. Pratibha and Arunil, stay on with us. A quick break. We'll be back with more news and updates. And of course, our coverage will continue on the phase 1 of polling in Bihar.